Hello friends, in this video we are going to talk about the female reproductive system. Female reproductive system is divided into following parts. It is mainly divided into two categories that we called external genitalia and internal genitalia. There are a number of external genitalia. The first that we call labia majora, labia minora, mons pubis, clitoris, vestibular gland, hymen layer, एंड ब्रेस्ट एंड यहाँ पे जो आपका लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस एंड क्लिटोरिस, ये चारों पार्ट मिलके आपका एक कॉमन पार्ट बनता है दैट वी कॉल्ड वल्वा. इंटरनल जेनिटिलिया अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ टाइप्स, दैट इज द ओवरीज. Ovaries are found in pair. Second is the tube-like structure that we called fallopian tube, and in fallopian tube we also called oviduct. The next one is uterus, where the embryo is conceived, and the vagina. These are the internal genitaliar organ. Now firstly we talk about the external genitalia. External genitalia. In case of external genitalia, actually the female reproductive system is produce the ova and secrete some hormones, and these hormones are responsible for secondary sexual characters of the female and preparing uterus to ready the conceive and lactation of the embryo. Now here we draw the structure of external genitalia. That is the triangular part of female reproductive system. The external large fold portion, inside it the another fold is there. That is the muscular fold and big size fold that we called labia majora. This is labia minora. That part we called clitoris. This is the part of mons pubis. On the part of mons pubis, pubic hair are present. Here two glands are present that we call the vestibular gland, and at the end of that type of structure is present that we called fourchette. The first part that we call labia majora, two large fold, and they become a boundary of vulva.
the external genitalia, it is the homogeneous to scrotum of male. It is composed of skin, fibrous tissue, and fat. Labia minora, is a smaller lip-like structure. And clitoris, it's a small erectile tissue homogeneous to penis of male. It is excited during the period of copulation like a penis of male. In case of female reproductive organ, that is the internal fold, and here two different openings are there. The upper opening that we called urethral opening, which is for the urine deposition, and the second lower opening that we called vaginal opening, and it is for the purpose of mating and copulation. Here two glands are present in pair that we call the vestibular gland and these are similar to the Bartholin's gland. They have a similar function like a Bartholin's gland, and it be also functionally similar to Cowper's gland in male. Means the function of the vestibular gland and the Cowper's gland, that is the formation of mucus and make the वे टू मॉइस्ट, ये आपका काम करता है, जो कॉपुलेशन का वे है उसको मॉइस्ट करने के लिए काम करता है. तो यहाँ पे दोनों जो ग्लैंड्स है आपके सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. एंड जो वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक थीन पतली सी लेयर रहती है जो ब्लड कैपिलरी से फुलफिल रहती है. दैट लेयर वी कॉल द हाइमेन, दैट इज़ द थीन लेयर प्रेजेंट इन वजाइना. जो वर्जिन वुमन में आपकी प्रेजेंट रहती है एंड आफ्टर दैट आपकी कॉपुलेशन के दौरान ब्रेक डाउन हो जाती है. बहुत बार कुछ एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण भी वो आपकी ब्रेक डाउन हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्चुअली इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल जेनेटिलिया but it is the part of excitation, so we include here that we call the breast or mammary gland. ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं आता, बट ड्यूरिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्साइटेशन के लिए आपका हेल्प करता है. दैट्स वाई इट इंक्लूडेड इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दीज आर पेयर of rounded structure, found in pectoral girdle, on ventral thoracic wall. हमने देखा है कि बॉडी की दो कैविटीज़ होती है, आपकी थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी. तो थोरेसिक कैविटी में आपका
पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड लोकेटेड रहती है, दैट वी नॉर्मली वी कॉल्ड इट ब्रेस्ट, एंड इट इज़ नथिंग बट द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। हमारी जो स्वेट ग्लैंड है, पसीने की जो ग्रंथि है, उसका मॉडिफाइड वर्जन जो है हमारा ब्रेस्ट कहलाता है या मेमरी ग्लैंड कहलाता है। It is active in female body while it is inactive in male body, that we call it is found in male also but non-functional, एंड फीमेल बॉडी में वो फंक्शनल रहती है बट ओनली द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का जो पीरियड है उसी दौरान आपका फंक्शन में रहती है, अदरवाइज फीमेल बॉडी में भी वो आपकी नॉन फंक्शनल रहती है। नाउ हियर वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड, दैट इज़ द एक्सटर्नल फैट लेयर, it has the reach of blood capillaries, there are so many fatty tissues are there, all these cells are the fatty cells. And these are the rounded cells, and they are open on the upper side of the breast, that we call fatty connective tissue. Lactiferous gland, lactiferous gland is responsible for the formation of lactose and milk. It is the dark portion here that we call nipple. And this is the common structure of the mammary gland or breast. Here the external genitalial organ of the female reproductive system are completed. In next video we talk about the internal genitalia or structure of ovary.